तो वहीं फिलिस्तीन की पत्रकार शिरीन अबू अकलेह के वेस्ट बैंक में मारे जाने पर दिल्ली में फिलिस्तीन के दूतावास पर कई देशों के राजदूतों ने पहुंचकर शोक जताया है। साथ ही कई और हस्तियां भी फिलिस्तीनी दूतावास पर पहुंचकर पत्रकार शिरीन को श्रद्धांजलि दी। पत्रकार शिरीन को श्रद्धांजलि देने वालों में अरब लीग, कुवैत, माल्टा, क्यूबा और दक्षिण अफ्रीका, ओमान, सूडान और अल्जीरिया के राजदूत समेत कई देशों के राजनयिक शामिल रहे। इस मौके पर फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू अल हाइजा से खास बातचीत की न्यूज इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने। फिलिस्तीन दूतावास में हम लोग आज हैं और फिलिस्तीन में एक महिला पत्रकार का निधन हो गया, जिसके बाद यहाँ आज दुख प्रकट करने कई दूतावास आए हैं और भारत के कुछ प्रमुख लोग भी आए हैं। मेरे साथ फिलिस्तीन के राजदूत अबू अल हजा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या घटनाक्रम था और क्या वो कहना चाहेंगे। एक्सीलेंसी, वेलकम इन न्यूज़ इंडिया। व्हाट इज़ यू सेइंग अबाउट दिस ऑल इंसिडेंट इन फिलिस्तीन? Thank you very much for India News 24/7. Let me say that it's not a new thing of the Israelis' crimes against the Palestinian people. This veteran journalist was working in Palestine from 1997, and she is well known to all the Israelis, soldiers or government or whatever. She has covered all the Israelis' crimes before. So what has happened exactly, that 4 journalists have come to journalist area far away from any direct connected between fighters, if they are from the Israelis or from the Palestinian side. And they were, as you have seen, in that tree, which normally they call it the journalist tree, right? As long as they leave the car and they start walk for about 10 meters or so, they shot 2 people. They shot the journalist As-Samhudi and in his back, and Shireen was shouting that Samhudi has been injured 2 times, then she has been shot. And they knew that they shot Shireen, right? The weapon and kind of weapon is an Israeli, and the Palestinian fighters, they don't have that kind of weapon. So she has been assassinated by the Israeli army, and this is not new for the Israelis' crimes. Excellency, this is not new for you, but you think this is not good for freedom of press? Look, I think responsibility also to the international community. We were fighting or struggling for 74 years. The international community are dealing in double standard. There is no good occupation and there is no bad occupation. Any occupation is bad. Now, if we look what has happened in Ukraine, within 1 week, these American and the Western countries, what they have done to Russia, right? So why Israel is out of the international law? For in West Bank and in Gaza, for 54 years, they are committed all these crimes. We might here condemn something like that, but Israel has not put in accountable. Israel should be put in accountability for its crimes. ये फिलिस्तीन के राजदूत थे जो कह रहे थे कि जो महिला पत्रकार के साथ फिलिस्तीन में हुआ वो एक अपराध था, वो हत्या थी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस पर आगे आना चाहिए, क्योंकि फिलिस्तीन कई सालों से इसे झेलता आ रहा है। अब ये रुकना चाहिए, शांति कायम होनी चाहिए।
कैमरामैन गोपाल और सहयोगी नमित के साथ मैं प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, फिलिस्तीन दूतावास, दिल्ली। तो फिलिस्तीन दूतावास पर कई खास हस्तियों ने पहुंचकर शोक जताया। इन लोगों ने कहा कि पत्रकार शिरीन को हमेशा याद रखा जाएगा। सुनिए। She was a brave journalist and we condemned her death and the traitors. She was murdered while she was covering, and it is a very cowardly attack on her, and we must pray and pay our condolences on the behalf of Indo-Arab fraternity.